Hello everyone, welcome to my channel Energy Interiors and Designing. So this video is the second part of the hotel designing in which we are going to discuss the further designs of the hotel layout. तो डिजाइन डिस्कस करने से पहले जो इसकी साइट डिटेल्स है हम वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस डिजाइन में जो होटल का साइट एरिया लिया गया है वो 11 एकर्स है, जिसका डायमेंशन फ्रंट 178 मीटर्स बाय 268 मीटर्स है। ग्राउंड कवरेज हमारे पास 33% है, जहाँ पे FAR होटल्स के लिए हम 1.5 लेते हैं। तो हमारा बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करने के बाद हमको मिला 68,340 स्क्वायर मीटर। So we have taken the front MOS that is 10 meters and whereas the side and rear MOS is 7 meters respectively. So after the side details we are going to discuss the concept of the hotel designing। तो ये होटल का डिजाइन एक्चुअली HSAC के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, जिसको हम होटल सर्विस अपार्टमेंट्स प्लस कन्वेंशन डिफाइन करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम तीनों सर्विसेज जो कि हमारी होटल प्लस कन्वेंशन एंड प्लस सर्विस अपार्टमेंट्स की हैं, वो हम एक ही साइट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ इन दिस डिजाइन द ग्रीन ब्लॉक इज बेसिकली द कन्वेंशन सेंटर, whereas the central block which is dark yellow in color is the hotel and lastly the building which is blue in color is the service apartment। तो इस डिजाइन में जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं जैसे कि रेस्टोरेंट्स, लॉबी, कन्वेंशन सेंटर, बिजनेस सेंटर, शॉप्स, दे आर ऑल डिजाइन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब ये ग्राउंड फ्लोर पे हमने इसलिए डिजाइन किया है ताकि हम इनका मैक्सिमम यूज कर सकें। जो लॉबी है वो सेंट्रली लोकेटेड है ताकि गेस्ट, कन्वेंशन प्लस सर्विस अपार्टमेंट्स दोनों फैसिलिटीज को सही तरीके से यूज कर पाए। द ब्लॉक विच इज रेड इन कलर is the main lobby, whereas all the block which are purple in color, they are the restaurants. The light yellow color is the recreational areas for the guests, whereas the dark pink color denotes the kitchen of the hotel. The blue block is the service apartments, and on the ground floor, this apartment has shops for the public, and lastly this is the service core, this one which is black in color. So the main concept of the hotel designing is basically based on the traditions of Mughal empires, where we have used the courtyard planning in the main design। तो आप देख सकते हैं कि हर ब्लॉक के बाद एक कोर्टयार्ड को प्लान किया गया है इस पूरे होटल डिजाइनिंग में। अब हम समझते हैं कि होटल का साइट लेआउट किस तरीके से किया जाता है। इस होटल के डिजाइन में 3 मेन एंट्रीज है जो कि रोड साइड से की गई है। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस फॉर द बैंक्वेट एंड आल्सो फॉर द होटल, एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस फॉर द शॉप्स एंड फॉर द सर्विस अपार्टमेंट। सो दिस एंट्रेंस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द कन्वेंशन ब्लॉक। वी आल्सो हैव द ऑन साइट पार्किंग सेपरेट फॉर द कॉन्फ्रेंस, बैंक्वेट एंड फॉर द शॉपिंग एरिया। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस और बैंक्वेट के लिए पार्किंग इसलिए डिजाइन की गई है क्योंकि यहाँ पास में ही कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे बिजनेस सेंटर एंड बैंक्वेट्स डिजाइन किए गए हैं। शॉपिंग सेंटर के लिए हमने साइट पे पार्किंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है क्योंकि शॉप्स जो है वो यहाँ इस जगह डिजाइन किए गए हैं। ऑन साइट पार्किंग के अलावा यहाँ बेसमेंट पार्किंग का भी प्रोविजन दिया गया है, जिसका डिजाइन साइट पे 3 जगह किया गया है। इन तीनों रैंप में से जो मेन रैंप बेसमेंट पार्किंग के लिए यूज किया गया है वो ये वाला है, एज यू कैन सी इन द लेआउट व्हिच इज सर्कुलर इन शेप। बेसमेंट में जाने के लिए जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से है फ्रॉम दिस साइड, एंड जो एग्जिट है वो इस तरफ से डिजाइन की गई है। इसके अलावा पूरी साइट डिफरेंट लैंडस्केप एलिमेंट से डिजाइन की गई है विद आल्सो वन स्विमिंग पूल ऑन बैक ऑफ द होटल, एज यू कैन सी ऑन द लेआउट। सो इन द सेंटर ऑफ द साइट दिस इज द मेन होटल ब्लॉक। द ब्लॉक एज यू कैन सी इन द लेआउट व्हिच इज हैच, एंड these are the areas of 3 blocks where the convention stands for 2,200 square meters in area, hotel stands for 4,800 square meters, lastly whereas service apartment stands for 1,300 square meters of area। So now let's discuss the hotel layouts in detail। So this is the ground floor plan of the hotel। तो ground floor जो आप देख सकते हैं लेआउट में बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है तीनों सर्विसेज का, जो कि है सर्विस अपार्टमेंट्स, होटल्स जहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड गेस्ट सर्विसेज दी गई है, एंड ऑल्सो द कन्वेंशन। तो ये बेसिकली तीनों सर्विसेज ग्राउंड फ्लोर पे डिजाइन की गई। तो सबसे पहले हम डिटेलिंग देखते हैं होटल ब्लॉक की। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द होटल विच वॉक्स यू टूवर्ड्स द मेन ग्रैंड लॉबी। अब इस लॉबी से जुड़ी हुई कई सारी सर्विसेज
ऐसी है जो हम गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रिसेप्शन सर्विसेज एंड द गेस्ट लाउंज। और भी सर्विसेज हैं जैसे कि रेस्टोरेंट, बार एंड कॉफी शॉप, ब्रेकफास्ट लाउंज एंड अदर रेस्टोरेंट्स व्हिच आर बीइंग डिजाइन कनेक्टिंग विद द लॉबी। इसीलिए जब भी हम लॉबी डिजाइन करते हैं होटल डिजाइनिंग में, हमें इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जितनी भी हम सर्विसेज गेस्ट के लिए दे रहे हैं वो विजिबल हो। Therefore, you can see in the design that the facilities such as the restaurants, coffee shop, guest lounge, the reception area, bar and other restaurants are being visible from this lobby. तो इस डिजाइन में 4 रेस्टोरेंट्स हैं। एक रेस्टोरेंट यहाँ पे है फ्रंट में, दूसरा रेस्टोरेंट यहाँ पे है इन द बिटवीन, तीसरा रेस्टोरेंट इस तरफ है and the fourth restaurant is here, and this basically जो restaurant है is open to sky restaurant, and here this is the coffee shop and the breakfast lounge for the guests, and also this hotel has 2 bars, one over here in the middle of the hotel design and दूसरा बार जो है वो फ्रंट में डिजाइन किया गया है। ये जो रेस्टोरेंट है डिजाइन में, दैट इज रेस्टोरेंट 1, इसकी किचन अलग सेपरेट डिजाइन की गई है क्योंकि ये रेस्टोरेंट्स दूसरे रेस्टोरेंट से कनेक्टेड नहीं है। So basically this is the main kitchen of the hotel at the back side of the hotel layout, जो restaurant 2, restaurant 3 and restaurant 4 को सर्विस दे रहा है, and also it provides the services to the coffee shop and the breakfast lounge. Now this kitchen also serves the services to this convention center. अब ये किचन सारे रेस्टोरेंट्स को किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये हम समझते हैं। होटल डिजाइनिंग में किचन लेआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, इसीलिए एक फंक्शनल किचन डिजाइन करना बहुत जरूरी है। तो किचन डिजाइनिंग में कई तरीके के डिफरेंट स्पेसेस होते हैं, जैसे कि प्री प्रिपरेशन एरिया, डिश वॉशिंग, पॉट वॉशिंग, देन फाइनल फूड प्रिपरेशन। तो बेसिकली खाना बनने से पहले जहाँ पे सब्जियां वगैरह कटती हैं तो उसको बोलते हैं प्री प्रिपरेशन स्पेस, एंड जहाँ पे फाइनल खाना कुक होता है दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल फूड प्रिपरेशन एरिया ओवर हियर। इन सबको मॉनिटर करने के लिए देयर इज आल्सो अ शेफ्स ऑफिस ओवर हियर इन बिटवीन, so that he can monitor all the food preparation of all the kitchens. होटल के किचन के डिजाइन में एक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस कॉरिडोर भी डिजाइन किया जाता है, जिस तरीके से इस डिजाइन में है ताकि ये किचन की सर्विसेज हम सारे रेस्टोरेंट्स में दे सकें। सो इस होटल के लेआउट में ये डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस कॉरिडोर डिजाइन की गई है ताकि ये सर्विस कॉरिडोर सारे रेस्टोरेंट्स में किचन की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। तो दिस इज द किचन फॉर रेस्टोरेंट 4 and 2, this is the kitchen for restaurant 3, and over here this is the kitchen for the coffee shop and the breakfast lounge. तो ये सारे किचन जो हैं बेसिकली इस सर्विस कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ दिस किचन ऑल्सो सर्व्स द सर्विसेज टू दिस कन्वेंशन सेंटर। ओवर हियर दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द कन्वेंशन सेंटर। एंट्री करने के बाद ही यहाँ पे 2 मेन रिसेप्शन एरिया है, और जो लॉबी जो है बेसिकली गेस्ट लाउंज और रिसेप्शन एरिया से डिजाइन की गई है। तो दिस कन्वेंशन सेंटर हैज बीन डिजाइन्ड विद डिफरेंट स्पेसेस। द वन स्पेस इज द बिजनेस सेंटर and another space is the banquet. तो बिजनेस सेंटर जो है वो ऑफिसेज और मीटिंग रूम्स के साथ डिजाइन किया गया है, whereas जो बैंक्वेट है वो डिफरेंट पार्टी रूम्स के साथ डिजाइन किया गया। This partition is optional as you can see in the layout and can also be used as the single banquet hall. दूसरे स्पेसेस जो कि ग्राउंड फ्लोर पे डिजाइन किए गए हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्रिएशन एरियाज। बेसिकली कई तरीके के स्पेसेस होते हैं, जैसे कि लगेज होल्ड, फ्रंट मैनेजर ऑफिस, असिस्टेंट फ्रंट मैनेजर ऑफिस, एंड रिसेप्शन एरिया से कनेक्टेड हुए रिजर्वेशन डेस्क होती है, कैशियर्स होते हैं, सेक्रेटेरियल पूल एंड स्मॉल स्टोर रूम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसेस। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्पेसेस which can be designed on the ground floor. The last space on the ground floor which has been designed for the guests are the recreational areas. So as you can see in the layout that the recreational areas are being designed on the back side of the hotel so that
the guest can get the most of the privacy. So ये जो recreation areas है ये कई तरीके की recreational facilities के साथ डिजाइन की गई है, जैसे कि gym, spa and salon, and also the gaming center. So these are the areas for the recreation zone. For example, game room has been designed with 240 square meters, whereas spa and sauna has been designed for 336 square meters. And lastly, gymnasium has been designed for 210 square meters. Lastly, the ground floor has been designed with the shops for the public use. And basically, this is the part of the service apartments. Like on the first floor, the service apartments will continue. Service apartments और shops के लिए ये हमारी main entrance है यहाँ से, जो कि हमको lobby, reception, guest lounge and the waiting areas. Shops area जो है वो दो corridors के साथ डिजाइन किया गया है. As you can see in the layout, one is this corridor and second one is this corridor. Shops की जो main entrance है वो इस corridor से है, whereas the second corridor plays the role for the circulation and the movement, and also this corridor has been designed for the exhibition purpose, which further connected with the hotel lobby. तो जो guest service apartments को use कर रहे हैं basically वो ये corridor को use करते हुए hotel की जो और services हैं जैसे कि restaurants, breakfast lounge, recreational areas, so they can use all these services with the help of this corridor. So this is basically the complete layout of the ground floor plan. So other layout and other service areas I'm going to discuss in my next video. Till then, please hit the subscribe button for more updates. Thank you.